हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत करना चाहूँगा। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और एक नई चैप्टर के बारे में जो कि होने वाली है हमारी चैप्टर नंबर 6 के बारे में। आज मैं अभी जो रीडिंग करना शुरू किया हूँ वो अबाउट द बुक द ब्रेन, द स्टोरी ऑफ यू। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द चैप्टर नंबर 5 के बारे में। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 6। तो आप सभी को फिर से वेलकम करना चाहूँगा मेरे इस वीडियो में। एंड आपको बताना चाहूँगा इस चैप्टर को लगभग 50 पेजेस हैं एक चैप्टर में। तो आई डिसाइड की इसे मैं डिवाइड करेंगे तो अच्छा होगा, एक एक पार्ट करके बनाएंगे। तो मैं डिसाइड किया हूँ। ओके, इन लास्ट जो पार्ट था उसमें भी मैंने जो वीडियो बनाया था लगभग 10 पेजेस मैंने रीडिंग किए थे। मतलब दो ही से ऐसे 1 2 ऐसे टाइप करके 2 पेजेस करके मैं रीडिंग किया था। ओके, एंड ऐसे करके मैं 10 पेजेस मुझे रीडिंग करनी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जो वीडियो को। तो आज की जो हमारी जो टॉपिक होने वाली है दैट इज हु विल बी हु विल वी बी, हम कौन होने वाले हैं। तो द ह्यूमन बॉडी इज ए मास्टरपीस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूटी, द symphony of 40 trillion cells working in concert. However, it has its limitations. Your sense set boundaries on what you can experience. Your body sets limits what you can do. But what if the brain could understand new kinds of inputs and control new kinds of limbs, expanding the reality we inhabit? We are at a moment in a human history when the marriage of our biology and our technology will transcend the brain's limitation. We can work, we can hack our own hard work to steer a course into the future. This is poised to fundamentally change what it will mean to be a human. ओके, इस चैप्टर में अभी जो मैं रीडिंग किया है इंट्रोडक्शन, ये बहुत ही प्यारा इंट्रोडक्शन है। एंड इसमें इस चैप्टर में हम स्पेशली देखने वाले हैं कि हमारे सेंसेस ना, हमारे जो एक्सपीरियंस की जो बाउंड्रीज को सेट करते हैं। एंड जो हमारी जो बॉडी होती है वो हमारी फिजिकल लिमिट्स को, हमारी बॉडी की जो लिमिट्स को सेट करती है। तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे बॉडी ही लिमिट सेट करती है। एंड इफ द ब्रेन सेट्स लिमिट, तो क्या क्या नहीं हो सकता। ओके, हम एक लिमिट बना देते हैं यार दिमाग का, तो वो अपना पोटेंशियल दे नहीं सकता। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने किसी एग्जांपल दे के आप समझाना चाहूँगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज किसी को ड्राइंग करना पसंद है। सपोज किसी को क्यों, सपोज मुझे ड्राइंग करना पसंद है। अगर मुझे इंजीनियरिंग में डाला जाएगा तो मैं क्या उसमें सरवाइव कर पाऊँगा? थोड़ा सोचो, क्या सरवाइव कर पाऊँगा?
आई थिंक तो मैं सोच रहा हूँ तो वहीं पे तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज वहीं पे मेरा दम घुटेगा कि भाई ये तो नहीं करने से होगा, बट तुम्हें जो अच्छा लगता है वो वहाँ पर कंफर्ट फील नहीं करोगे तुम। ओके, उसी तरह ही जब हम किसी को एक कैद कैद खाने के जैसे रख देते हैं, किसी को हम बाउंड्रीज को सेट कर देते हैं। हम अच्छी बात है, सोसाइटी में रहना है तो बाउंड्रीज को मानना पड़ेगा, बट अपने लिए कुछ करना है तो बाउंड्रीज को थोड़ी एक्सपांड करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो नाउ कमिंग टू द टॉपिक, टॉपिक में आते हैं। ओवर द लास्ट 100,000 years, our species has been on quite a journey. We have gone from living as primitive hunter gatherers surviving on scraps to a planet conquering hyper connected species that defines its own destiny. Okay, and today we enjoy mundane experiences that our ancestors could never have dreamed of. We clean rivers that we can call into our well adorned caves when we desire. We hold small rock sized devices that contain the knowledge of the world. We regularly see the tops of clouds and the curvature of our home planet from space. We send messages to the other side of the globe in 80 milliseconds and upload files to a floating space colony of humans at 60 megabits per second. Even when simply driving to work, we routinely move at speeds that outstrip biology's great masterpiece, such as cheetahs. Our species owes its runaway success to special properties of the 3 pounds of matter stored inside our skull. Okay, what is about the human brain that has made this journey possible? If we can understand that secrets behind our achievements, then perhaps we can direct the brain strengths in careful, purposeful ways, opening a new chapter in the human story. Okay, and next, what the next 1,000 years have in store for us? In the far future, what will the human race be like? अब सभी को मैं बताना चाहूँगा, जो इसकी जो इंट्रोडक्शन हुई है ना, बहुत ही प्यारी। इसमें कहा गया है कि हमारे जो एंसेस्टर थे 100,000 years बैक, उस वक्त बहुत सोचे भी नहीं होंगे कि हाँ आगे जाकर ऐसी टेक्नोलॉजी भी आएगी। जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, 1 मिली सेकेंड के अंदर एक एक ग्लोब की एक साइड से दूसरी साइड एक इंसान को एक मैसेज भेज सकते हैं, एंड एक फाइल जो अपलोड करते हैं उसे हम इतने स्पीड से उसे अपलोड करने की स्पीड है लगभग 60 मेगाबिट।
मेगा ना गीगाबिट पर आई थिंक। एंड आज इतनी टेक्नोलॉजी इतनी हो चुकी है, उस टाइम पे बस उनके दिमाग में भी आया ही नहीं होगा कि भाई ऐसा भी चेंजेस हो सकता है। एंड अब ये हमारे दिमाग में ये नहीं पता है कि आगे जो आने वाले 100,000 ईयर्स वो कैसे होने वाले हैं, एंड उस टाइम पे क्या होगा हमें भी पता नहीं। क्योंकि हम टेक्नो अभी थोड़ा आप सबको सॉरी थोड़ी सी मैं इंटरप्रेट करना चाहूँगा। आजकल हम जो डिजिटल की एरा के नाम पे जो अर्थ को हम बहुत ही बर्बाद कर रहे हैं, एंड उसे संभालने के लिए कोई पदक्षेप या अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं ले रहे हैं। एंड आई थिंक जो आने वाली जनरेशन बहुत ही हार्ड फेजेस से गुजरने वाली है, एंड उसी हिसाब से वो भी जिएंगे, बिकॉज चेंजेस इज द रूट ऑफ जिंदगी की रूट एक परिवर्तन ही है। तो ये तो आने वाला ज़रूर है, हम इसे रोक भी नहीं सकते क्योंकि इतना पॉपुलेशन बढ़ चुका है इस धरती पे। लेकिन ना दिन तो इसे भी रिसाइकिल होना है, जैसे कि पता है हर चीज़ एक रिसाइकिल में जाती है। आई होप दुनिया भी एक रिसाइकिल में जाने वाली है, तो इसमें कोई शौक नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाली है द फ्लेक्सिबल computational device, the flexible computational device। ओके, इसमें क्या है कि लेट्स स्टार्ट करते। मैं देखा नहीं अभी तक, रीडिंग भी नहीं किया। द सीक्रेट टू अंडरस्टैंडिंग आवर सक्सेस एंड आवर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी is the brain's tremendous ability to adjust, known as brain plasticity. As we As we saw in Chapter 2, the feature has allowed us to drop into any environment and pick off on the local details we need to survive, including local language, local environmental pressures, or local cultural requirements. Brain plasticity Brain plasticity is also the key to our future because it opens the door to making modification to our own hardware. So let's begin by understanding just how flexible a computational device the brain is. Consider the case of a young girl named Cameron Mott. At the age of 4, she began to have violent seizures. The seizures were aggressive. Cameron should suddenly drop the floor, requiring her to wear a helmet all the time. She was quickly diagnosed with a rare and debilitating disease called Rasmussen's equalities. Her neurologist knew that this form of epilepsy would lead to paralysis and eventually to death. So they proposed a drastic surgery in 2007 in an operation that took almost 12 hours. A team of neurosurgeons removed
an entire half of Cameron's brain. What would be the long-term effects of removing half her brain? As it turns out, the consequences were surprisingly slight. Cameron is weak on one side of her body, but otherwise she is essentially indistinguishable from the other children in her class. She has no problems understanding language, music, math, stories, and etc. She good in school and the participates in sports. And how could this be possible? It's not that one half of Cameron's brain was simply not needed. Instead of a remaining half of Cameron's brain dynamically rewired to take over the missing functions, essentially cramming all the operations into half the brain space. Cameron's recovery underscores a remarkable ability of the brain. It wires itself to adjust the inputs, outputs, and tasks at hand. In this critical way, the brain is fundamentally unlike the hardware in our digital computational. Instead, it's a live wire. It reconfigure its own circuitry. Although the adult brain is not quite as flexible as a child, it still retains an astonishing ability to adapt and change. As we saw in previous chapters, every time we learn something new, whether it's the map of London or ability to stack cups, the brain changes itself. It's this property of brain, its plasticity, and that enables a new marriage between our technology and our biology. ओके, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो अभी जो रीडिंग किया मैंने, इसमें क्या है, स्पेशली इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ही और बात करना और जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिकॉज हम कैसे अडेप्ट कर चुके हैं। देखिए, हमारे ancestor के टाइम पे that time they lived in the forest and they survive to they survive करने के लिए they fight to the lions, the animals in that living forest, जीने के लिए उनसे फाइट करके एंड चुप चुप के रहना पड़ता था। एंड हाउ नाउ डेज वी मेक ऐसे ऐसे हम चीज़ें बना दिया है अभी कि हम सारी चीज़ों से डरते नहीं हैं। एंड वी हैव फेस्ड एंड मेकिंग इन इतना ही बड़े बड़े इमारत बना देते हैं। हाउ इज पॉसिबल? अगर हमारा दिमाग अगर फ्लेक्सिबल नहीं होता, अगर हमारा दिमाग फ्लेक्सिबल नहीं होता तो इसे एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था। ओके, मैं इसे आपको एक एग्जांपल तौर पे मैं कुछ समझा देता हूँ। एक इंसान है, दो इंसान है। एक इंसान किसी की बात नहीं सुनता, एक इंसान किसी की बात नहीं सुनता, वो सिर्फ अपना बोलबाला चलाता है कि भाई मेरा ही सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वो ही सही है, किसी की सुनता नहीं वो।
अ, दूसरी तरफ और एक इंसान है जो अच्छे से सुनता है, सबका सुनता है, बट बोलता अपना है। इसमें कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहा आपके हिसाब से? मैं आई थिंक जो दूसरे वाला जो मैं सेकंड में बोला वो, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है कि जो भी हो रहा है चेंजेस उसे एक्सेप्ट कर रहा है, जो भी चेंजेस हो रहा है एक्सेप्ट कर रहा है, जो भी चीज़ नॉलेज है उसे एक्सेप्ट कर रहा है एंड अपने हिसाब से उसे अपने लाइफ में अडप्ट कर रहा है, यूज कर रहा है इसे। वो इंसान सही है, वो फ्लेक्सिबल है, इसलिए वो आगे तक जाएगा। लेकिन जो अपने इस हैबिट को चेंज नहीं करते वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए फ्लेक्सिबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड नेक्स्ट, ओके, सॉरी मैं कहा था, हाँ, इसमें वो फ्लेक्सिबल बात ही कहा गया है कि हमारे ब्रेन एक फ्लेक्सिबल है और प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी कैरी करता है। इसलिए यहाँ पर एक सॉरी, इससे पहले मैं प्लास्टिसिटी के बारे में कुछ बोलूँ, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे इसे, एक डिजीज हुई थी एक लड़की की, छोटी लड़की की, एंड उसमें उसकी ना आधी ब्रेन को निकालना पड़ा। एंड उससे बाद उसे देखा कि आफ्टर रिमूव्ड half of his sorry her brain, he will be live as a normal person। वो स्कूल में सारी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही थी, लैंग्वेज सीख रही थी, अच्छे से समझ रहा था, एवरीथिंग विल परफेक्ट। एंड ये सब कैसे हुआ? ओके, ये सब कैसे हुआ? बिकॉज हमारे ब्रेन के अंदर में एक प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, जो कि अगर किसी चीज़ की जो ब्रेन सर्किट्स में कुछ भी इनकम्प्लीट लगते हैं तो वो उसकी कमी को पूरा करने के लिए और एक सर्किट अपने आप एक खुद ही एक सर्किट बना लेती है, एंड उस हिसाब से हम नई चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं। एंड वो ब्रेन भी जो हाफ ब्रेन थी उसी से वो सर्वाइव कर पाई। वो ही को दैट इज कॉल्ड ही प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रेन। ओके, ये था इस टॉपिक के बारे में, द फ्लेक्सिबल कंप्यूटेशनल डिवाइस जो कि ब्रेन है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लगिंग इन पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके, प्लगिंग इन पेरिफेरल डिवाइसेस। अगर आप में किसी से सॉरी आप लोगों में से किसी ने कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज रखा होगा तो उन सारे लोगों को पता होगा कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं। हाँ, पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेरिफेरल डिवाइस वो चीज़ होते हैं जो एक्सटर्नली कंप्यूटर में डाला जाते हैं। जैसे हो गया हमारे माइक, हमारे वेब कैम हो गया, ये सारे हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कह सकते हैं एक तरफ से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, दैट इज वी हैव बिकम प्रोग्रेसिवली better at plugging machinery directly into our bodies. You may not realize it, but currently hundreds of thousands of people are walking around with artificial hearing and artificial vision. With a device called cochlear implant, an external microphone digitize a sound signal and feeds it to the auditory nerve. Similarly, the retinal implant digitizes a signal from
a camera and sends it through an electrode grid plugged into the optic nerve at the back of the eye. For deaf and blind people around the planet, these devices are restored their senses. Okay, and it was not always clear that such an approach would work. When these technologies were first introduced, many researchers were skeptical. The brain is wired off with such precision and specificity that it was not clear there could be meaningful dialogue between metal electrodes and biological cells. Would the brain able to understand crude non-biological signals, or would it be confused by them? Okay, as it turns out, the brain learns to interpret the signals getting used to these implants in is a bit like learning a new language for the brain. The foreign electrical signals are unintelligible, but the neural networks eventually extract patterns. Incoming data, although the input signals are crude, the brain finds a way to make sense of them. It haunts for patterns, cross-referencing with other senses. If there is structure to be found in the incoming data, the brain ferrets it out, and after several weeks, the information began to take on meaning, even though the implants give slightly different signals that than do our natural sense organs. The brain figures out how to make do it with the information it can get. ओके, इस टॉपिक में जो प्लगिंग इन पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब क्या करते हैं। सपोज हम कंप्यूटर की जो सीपीयू होती है उसे हम ब्रेन मानते हैं। सीपीयू सेंट्रल यूनिट प्रोसेस, सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर मानते हैं। उसमें अगर हम पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे हो गया हमारा माइक्रोफोन हो गया, वेब कैम हो गया, इससे इन सारे चीज़ों को हम उसमें अगर प्लग इन करते हैं तो उससे भी वो डाटा को एक्सेस करके हमें मॉनिटर में डिस्प्ले करती है, हाँ कि नहीं। उसी तरह आर्टिफिशियल हियरिंग एंड विजन मतलब आर्टिफिशियली जो इंसान बनाते हैं सुनने के लिए, हियरिंग में एक इम्प्लांट किया जाता है और हियरिंग के लिए कोहिलर इम्प्लांट कहते हैं। एंड जो विजन के लिए रेटिनल इम्प्लांट मतलब रेटिना है कि जो आइज़ की एक पार्ट है उसमें, और इसमें एक इलेक्ट्रोड रहती है एंड कैमरे से उस इलेक्ट्रोड में वो सिग्नल्स जाते हैं एंड वो ब्रेन अडप्ट ओवर द टाइम वो उसे उस इंफॉर्मेशन को अडप्ट कर लेती है एंड उस चीज़ को क्लियरली तो वो देख नहीं सकते, बट थोड़ी सी कम तो दिख सकता है। बिकॉज इतनी हम डिजिटली इम्प्रूव हो चुके हैं, डेवलपमेंट हो चुके हैं कि एक आर्टिफिशियल चीज़ है हमारे ब्रेन को यूज कर रही है एंड फोर्स कर रही है कि हाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। मतलब इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स देयर विल बी ऐसे सारी चीज़ें निकल के आएंगे जो कि हमारे बॉडी में इम्प्लांट हो चुके हैं, जो एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि मेमोरी हो गया, बाहरी मेमोरी। जैसे कि अभी हम क्या करते हैं,
मेमोरी कार्ड का यूज़ करते हैं एंड हम प्लग इन करते हैं हमारे फ़ोन में। उसी तरह ही हम एक्सटर्नली एक मेमोरी लाकर हमारे दिमाग के लिए प्लग इन कर देंगे, तो जो भी कुछ हम याद करेंगे वो मेमोरी में जाएगा। आई थिंक ऐसे भी होगा कमिंग ईयर्स में। एक एक एंड इस चीज़ को ब्रेन भी एक्सेप्ट कर रही है। क्यों? ओके, ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो प्लास्टिसिटी, मैंने बोला था ना प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के बारे में, उसमें वो काम कर रही है। तो जो चीज़ नहीं आएंगे उससे तो ओवर द टाइम वो उसे एक्सेप्ट करने को सोचेगी, एंड कैसे उसे ब्रेन में प्रोसेसिंग करा जाएगा उसके बारे में भी वो सोचेगी ऑटोमेटिकली। ओके, आर्टिफिशियल हियरिंग एंड विजन एक बॉक्स में है, ये देख सकते हो। ये आई वाला है एंड ये हियरिंग वाला। ए ओके, कोहिलर इम्प्लांट एंड रेटिनल इम्प्लांट के बारे में थोड़ी सी हम देख लेते हैं क्या है। कोहिलर इम्प्लांट bypasses problems in the biology of ear and feeds its audio signals directly to the undamaged auditory nerve, the brain's data cable for sending electrical impulses to the auditory cortex for decoding. The implant picks up sounds from the outside world and passes them to the auditory nerve by means of 16 tiny electrodes. The experiences of hearing does not arrive immediately. People have to learn to interpret the foreign dialect of the signals fed to the brain. As one cochlear implant recipient, Michael Korust described his experience. When the device was turned on a mouth after surgery, the first sentence I heard sound like z z z z z which or z. ओके ओके, ये साउंड है। मैंने ऐसे कोई ये नहीं यूज़ किया कि अगर कुछ करने के लिए, बट दिस इज आर साउंड व्हेन एक इंसान को पहली बार वो ईयर इम्प्लांट किया जाता है कोहिलर, एंड वो कैसी पहली बार साउंड कैसे सुनता है उसके बारे में इसमें पहली साउंड कैसी थी उसके बारे में लिखा गया है। एंड माई ब्रेन ग्रेजुअली लियर्ड हाउ टू इंटरप्रेट द एलियन सिग्नल। ओके, बिफोर लॉन्ग जी sees which or weave become what did you have for breakfast? After months of practice, and I could use the telephone again, even converse in loud bars and cafeterias. Retinal implants work on similar principle, वो सेम प्रिंसिपल जैसे कि कोकिलर जैसे काम कर रही है जो कि हियरिंग के लिए, उसी प्रिंसिपल को लेकर वो रेटिनल इम्प्लांट भी उसी में काम करती है। एंड रेटिनल भी इम्प्लांट bypass द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द photoreceptor sheet as sending out their tiny sparks of electrical activity. These implants are used mostly for eye diseases in which the photoreceptors at the back of the eye are degenerating, but in which the cells of optic nerves remaining healthy, even though signals sent by the implant are not precisely what the visual system is used to. The downstream process for able to learn the extract the information they need for vision. ओके, इस टॉपिक में आप सभी ने देखा कि जो हमारे आर्टिफिशियल प्लगइन्स हैं, आर्टिफिशियल डिवाइसेस जैसे सुनने के लिए कोहिलर हो गया, रेटिनल हो गया देखने के लिए,
कैसे ह्यूमन बॉडी में वो ट्रांसप्लांट कर इम्प्लांट करके उसी से उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका ब्रेन की पावर कितनी है, ब्रेन की पावर कितनी है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज plug and play, an extra sensory future. Plug and play, the extra sensory. The brain's plasticity allows new inputs to be interpreted. What sensory opportunities does the open up? We come into the world with a standard set of basic senses: hearing, touch, sight, smell, taste, along with other senses such as balance, vibration, and temperature. The sensors we have are the portals by which we pick up signals from our environment. However, as we saw in the first chapter, these senses only allow us to experience a tiny fraction of the world around us. All the information sources for which we don't have sensors are invisible to us. I think of our sensory portals as peripheral plug and play devices. The key is that the brain does not know and does not care where it gets the data. Whatever information comes in, the brain figures out what to do with it. क्या करा जाएगा इसके साथ? In this framework, I think the I think of the brain as a general purpose computing device. It operates on whatever it's feed. The idea is that Mother Nature only needed to invent the principles of brain operations once, and then she was freed off to tinker with designing new inputs channels. And the result is that all these sensors we know and love are merely devices that can be swapped in and out. Stick them in the brain, can get to work. In this framework, evolution does not need to continually redesign the brain, just the peripheral devices, and the brain figures out how to utilize them. Just look across the animal kingdom. You will find a mind-boggling variety peripheral sensors in use by animal brains. Snakes have heat sensors. The knife, glass knife fish has electrosensors for interpreting changes in the local electrical field. Cows and birds have magnetite with which they can orient themselves to the Earth's magnet field. Animals can see in ultraviolet, and elephants can hear at very long distance, while dogs experience as a richly scented reality. The crucible of nature selection is the ultimate hacker space, and these are just some of the ways that
genes have figured out how to channel data from the outside world into the internal world. The end result is that evolution has built a brain that can experience many different slices of reality. The consequence I want to highlight is that there may be nothing special or fundamental about the sensors we are used to. They are just what we have inherited from a complex history of evolutionary constraints. We are not stuck with them. Our main proof of principles for this idea comes from a concept called sensory substitution, which refers to feeding sensory information through unusual sensory channels such as vision, through touch. The brain figures out what to do with the information because it does not care how the data finds its way in. Sensory substitution might sound like science fiction, but in fact, it's already well established. The first demonstration was published in the journal Nature in 1969. In that report, neuroscientist Paul Bach-Erita demonstrated that blind subjects could learn to see objects even when the visual information was fed to them in an unusual way. Blind people were seated in a modified dental chair, and the video feed from a camera was converted into a pattern of small plungers pressed against their lower back. In other words, if you put a circle in front of the camera, the participants would feel a circle on her back. Put a face in front of the camera, and the participant feels the face on her back. Amazingly, blind people could come to interpret the objects and could also experience the increasing size of approaching objects. They could, at least in a sense, come to see through their backs. Okay, this was the first example of sensory substitution to of many to follow. Modern incarnations of this approach include turning a video feed into a sound stream or a series of small shocks of forehead or tongue. An example of the latter is the postage stamp sized device called the port, which work by delivering a tiny electrical shocks to the tongue via a small grid that sits on the tongue. A blind subject wears sunglasses with a small camera attached. Camera pixels are converted into electrical pulses on the tongue, which feels something like the fizz of a carbonated drink. Blind people can become quite good at using the brain fort, navigating obstacles, courses, or throwing a ball into basket. One blind athlete, Eric Wilhelm, Wilhelm Meyer, uses the brain port to rock climb, accessing the opposition crashes and creeps from the patterns on his tongue. If it sounds crazy to see through your tongue,
Just keep in mind that seeing is never anything but electrical signals streaming into the darkness of your skull. Normally, this happens via the optic nerves, but there is no reason the information can't stream via other nerves. Instead, as sensory substitution demonstrates, the brain takes whatever data comes in and figures out what it can make of it. One of the projects in my laboratory is to build a platform of enabling sensory substitution. Specifically, we have built a wearable technology called the variable extrasensory transducer, transducer, transducer or VEST, worn in conspicuously under the clothing. The waist is covered with tiny vibratory motors. These motors convert data streams into dynamic patterns of vibration across the torso. We are using the best to give hearing to the deaf. After about 5 days of using the VEST, a person who was born deaf can correctly identify spoken words. Although the experiments are still in their early stages, we expect that after several months of wearing the vest, users will come to have a direct perceptual experiences, essentially the equivalent of hearing. It may seem strange that a person can come to hear via moving patterns of vibration on the torso, but just as with the dental chair or the tongue grid, the trick is this: the brain does not care how it gets the information as long as it gets it. Okay. uh, नाउ कमिंग टू द इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं क्या है इसमें। ओके। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें लिखा ये है कि हमारी ब्रेन ना, उसे ये पता नहीं है कि इंफॉर्मेशन राइट है या रॉन्ग। इसे पता नहीं है कि ये राइट है या रॉन्ग। ब्रेन का काम ये है, वो अगर सपोज कुछ इनपुट्स मेरे ब्रेन के अंदर चले गए हैं, तो ब्रेन क्या करेगा, बजाय ये सोचना कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, ये क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन का क्या करा जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, उसे क्या उस डोंट केयर अबाउट कहाँ से इंफॉर्मेशन आई, उसे इस बात की चिंता है कि इस जो आई है मेरे पास जो चीज़, उस चीज़ का मैं क्या करूं, उसके साथ क्या करें। एंड इस प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से बहुत सारे चीज़ें हो पाई है। एंड जैसे कि हम टोंग से हम सुन सकते हैं, टोंग से वाइब्रेशन के साथ हम देख भी सकते हैं। कि देखना और सुनना, साउंड, ये सारे सब एक इलेक्ट्रिकल वेव्स एंड मैकेनिज्म है, तो हम एब्सोल्युटली हम कर पाएंगे। ओके। ये अबाउट प्लग एंड प्ले एंड एक्स्ट्रा सेंसरी फ्यूचर। सेंसरी मतलब सेंस के द्वारा हम करते हैं, दैट इज टॉक अबाउट दैट। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंसरी अगमेंटेशन। ओके, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा इसमें द वेस्ट के बारे में भी हम देखेंगे इसमें। ओके, ये होने वाला आई थिंक
ओके, इसके बाद और एक टॉपिक की रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसमें हम विराम लेंगे। बट नाउ कमिंग टू द सेंसरी आर्गुमेंटेशन। जाहिर सी बात है, सेंसरी के वर्ड यूज हुआ है तो सेंसरी के बारे में बात किया जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक, sensory substitution is great for circumventing broken sensory systems. But beyond substitution, what if we could use this technology to extend our sensory inventory? To this end, my students and I are currently adding new uh, senses to human repertoire to augment our experience of the world. Consider this: the internet is streaming bytes of interesting data, but currently we can only access that information by staring at a phone or computer screen. What if you could have real time data streamed into your body so that it's become part of your direct experience of the world? In other words, what if you could feel data? And this could be weather data, stock exchange data, Twitter data, cockpit data from an aeroplane, or data about the state of factory, all encoded as a new vibratory language that the brain learns to understand. As we went about your daily task, you could have a direct perception of whether it's raining 100 miles away or whether it's going to snow tomorrow. Or you could develop intuitions about where the stock markets were going and subconsciously identifying the movements of the global economy. Or you could sense what's trending across the Twitter sphere, and this is way to be tapped into the consciousness of the species. Although this sounds like science fiction, we are not far from this future, all thanks to the brain's talent and at extracting patterns even when we are not trying. That is to trick that can allow us to absorb complex data and incorporate it into our sensory experience of the world, like reading this page. Absorbing new data streams will come to feel effortless, unlike reading. However, sensory addition would be a way to take on new information about the world without having to consciously attend to it. At the moment, we don't know the limits or if there are limits to the kinds of data the brain can incorporate, but it's clear that we are no longer a natural species that has to wait for sensory adaptation on an evolutionary time scale. As we move into the future, we will increasingly design our own sensory portals on the world. We will wire ourselves into an expanded sensory reality. ओके, नाउ कमिंग टू द, इसके बारे में क्या बात करें, सेंसरी ऑगमेंटेशन। मतलब यह है, हमें पता चला कि जो नेक्स्ट जो प्रीवियस टॉपिक थी, जो सब टॉपिक थी, उसमें ये बात किया गया था कि सेंसरी से हम जो ब्लाइंड पीपल हो गया,
जो बहरे हो गया, जो सुनाई नहीं देते उनको, डिसेबिलिटी, ओके, उनको जो वाइब्रेशन सेंसरी के द्वारा हमने कैसे ठीक ज़्यादा ठीक नहीं बट ठीक करा जा सकता है। एंड इसमें जो सेंसरी ऑगमेंटेशन में ये कहा गया है कि ओके, जैसे तो हमारे पास नेचुरल वाइब्रेशन सिस्टम है, जैसे कि हमारे ऑप्टिकल्स हैं जो हमारे जो सराउंड्स को देखकर हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन को देती है। बट यहाँ पर एक चीज़, न्यू चीज़ ऐड किया जाने का, अगर मेरे पास सब कुछ है एंड उसमें ऐड करना चाहूँगा न्यू वाइब्रेशन, जैसे कि उस चीज़ से हम जो बाहर की डाटा, जैसे कि हमारे फ़ोन में डाटा है कि PDF फाइल्स हो गया, किसी फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन हो गया, किसी बुक की नोट कि अगर हम हमारे बॉडी में फ्लो और उसे महसूस कर सकते हैं तो कैसा होगा। एक तो चीज़ ये है कि अगर हम जो डाटा जो फ़ोन में रहता है, एक्सटर्नल रहता है, अगर उसे हम अंदर इंटरनली हम फील कर लें तो जाहिर सी बात है हम इंसान, नेचुरल स्पेसिस तो हम रहने नहीं 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 वाले हैं। तो फर्स्ट ये है। तो बट यहाँ पर ये बात क्या गया है कि अगर हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं एक और सेंसरी को तो क्या होगा। वैसे तो ताक देनी पड़ेगी, हमारी ब्रेन बहुत टैलेंट है, सबकी ब्रेन बहुत टैलेंट है एंड उससे सिर्फ सही चीज़ें इनपुट देना चाहिए, बिकॉज उसे ये पता नहीं है कि जो आप इनपुट दे रहे हो उसे वो सही है या गलत, उसे पता नहीं है। उसे सिर्फ प्रोसेस करना है और आउटपुट दे देना है। तो इन्फॉर्मेशन गलत हो या सही है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो आपको डिस्ट्रॉय करने का ताकत रखता है या आपको डेवलप करने का ताकत रखता है। इसमें आपको सोचनी चाहिए, और मुझे भी। एंड नाउ कमिंग टू द जो टॉपिक है वेस्ट। वेस्ट के बारे में थोड़ी सी हम देख लेते हैं क्या है ये। टू प्रोवाइड सेंसरी सब्सटीट्यूशन फॉर द deep, my graduate student Scott Novich and I built a vest. This wearable tech captures sound from the environment and maps it to small vibrational motors all over the torso. The motors activate in pattern according to the frequencies of the sound. In this way, sound becomes moving patterns of vibrations. At first, these vibratory signals make no sense, but with enough practice, the brain works out what to do with the data. Deaf people become able to translate the complicated patterns on the torso into an understanding of what being said. The brain figures out how to unconsciously unlock the patterns, similarly to the manner in which a blind person comes to effortlessly read braille. The West has the potential to be a game changer for the deaf community. Unlike a cochlear implant, it does not require an invasive surgery, and it's at least 20 times cheaper, which makes it a solution that can be global. The bigger vision for the West is this: beyond sound, it can also serve as a platform for any kind of streaming information to find its way to the brain. See videos of the West in action at eagleman.com. ओके, वेस्ट टेक क्या है? आई थिंक इसके बाद मैं इसे
आज के लिए इतना ही रखने विराम देने वाले हैं। बट द बेस्ट क्या है? वेस्ट वो चीज़ है जिस चीज़ से हमें पता चले, जैसे कि बेस्ट ही एक ऐसी मशीन है जिसे वो एनवायरनमेंट की जो साउंड्स को वाइब्रेशनल में कन्वर्ट करके जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव करा देता है हमारे बॉडी की, एंड उसी से वो ट्रांसमिट करता है एंड ब्रेन को वो इनपुट देता है। बहुत बेहतरीन इन्वेंट है ये द वेस्ट। इससे वो फ्यूचर में जो ब्लाइंड, जो डिसेबिलिटीज पर्सन है, जो सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ओके, नहीं, और एक फेज रीडिंग करेंगे, इसके बाद में स्टॉप करेंगे। बट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू गेट द बेटर बॉडी। कैसे हम एक बेटर बॉडी को हम पा सकते हैं। हाउ वी सेंस द वर्ल्ड इज ओनली हाफ द स्टोरी, the other half is how we interact with it. In the same way that we are beginning to modify our sensory selves, can the brain's flexibility to leveraged to modify the way we reach out and touch the world. Meet Jan Sewerman because of a rare genetic disease called spinocerebellar disorder. The spinal cord nerves connecting her brain to her muscles have deteriorated. Orated. She can feel her body, but she cannot move it. As she describes it, my brain is saying, "Lift off to my arm," but the arm is saying, "I can't hear you." Her total paralysis made her an ideal candidate for a new study at the University of Pittsburgh School of Medicine. Researchers there have implanted two electrodes into her left motor cortex, the last stop for brain signals before they plunge down the spinal cord to control the muscles of the arm. The electrical storms in her cortex are monitored, translated on a computer to understand the intention, and the output is used to control the world's most advanced robotic arm. When Jan wants to move the robotic arm, she simply thinks about moving it. As she moves the arm, Jan tends to talk to it in the third person, go up, go down, 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 and go right, and grasp release, and the arm does so on cue. Although she speaks the commands out loud, she has no need to. There is a direct physical link between her brain and the arm. Jan reports that her brain has not forgotten how to move an arm, even though it had not moved on one in 10 years. It's like riding a bicycle, she says. Jan's proficiency points to a future in which we use technology to enhance and extend our bodies, not only replacing limbs or organs, but improving them, elevating them from human fragility to the something more durable. Her robotic arm is just the first hint of an upcoming bionic era in which we will be able to control
much stronger and longer lasting equipment than, than the skin and muscle and brittle bones we are born with, among other things that are opens of new possibilities for space travel, something for which our delicate bodies are ill equipped. Beyond replacement limbs, advancing brain machine interface technology suggests more exotic possibilities. Imagine extending your body to be something unrecognizable. Start with this idea. What if you could use your brain signals to wirelessly control a machine across the room? Envision answering emails while simultaneously using your motor cortex to control a thought controlled vacuum cleaner. At first glance, the concept may sound unworkable, but keep in mind that brains are great at running tasks in the background, not requiring much in the way of conscious bandwidth. Just consider how easily you can drive a car while simultaneously talking to the passengers and fiddling with the radio knob. With the proper brain machine interface and wireless technology, there is no reason you could not control large devices such as a crane or a forklift wirelessly at a distance with your thoughts. In a same way you might absent-mindedly dig with a trowel or a play a guitar. Your capacity to do this well would be enhanced by sensory feedback, which could be done visually. You watch how the machinery moves, or even by feeding data back into your somatosensory cortex, you feel how the machine moves. Controlling such limbs would take practice and be awkward at first, in the same way that a baby has to flail for some months to learn how to finally control its arms and legs. With time, these machines would effectively become an extra limb, one that could have extraordinary strengths, hydraulic and otherwise. They would come to feel the way that your arms or legs do to you now would just be another limb, simple extensions of ourselves. We don't know of a theoretical limit on the kinds of signals brain could learn to incorporate. It may be possible to have almost any sort of physical body and any kind of interaction with the world that we want. There is no reason that extension of you could not be taking care of tasks on other side of the planet or the mining rocks on the moon while you are enjoying a sandwich here on earth. The body we arrive with is really just the starting point for humanity. In the distant future, we won't just be extending our physical bodies, but fundamentally our sense of self as we take on new sensory experiences and control new kinds of bodies that will change us profoundly as individuals. Our physicality sets the stage for how we feel, how we think, and who we are without the limitations of the standard issues. Senses and the standard issue body will become different people. Our great grandchildren may struggle to understand who we are and who we were and what was important to us. At this moment in history, we may have more in common with our stone age ancestors than with our nearer future
डिसेंडेंट्स। ओके, आज के लिए इतना ही। एंड जाने से पहले इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। हाउ टू गेटिंग ए बेटर बॉडी। क्या होगा अगर आपको साइमल्टेनियसली आप दो तीन चीज़ कर रहे होते हो, क्या होगा। एक आप यहाँ पर मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ, उसके साथ मेरे थॉट्स में मैं और एक काम कर रहा हूँ मेरे दिमाग को से कि मैं बाहर कहीं घूम जा रहा हूँ। बाहर एक मेरी कार खड़ी है, उस कार को मैं ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ से बैठे ही कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल है। इट्स लिसन लाइक एन नॉट वर्केबल एंड इम्पॉसिबल, बट इम्पॉसिबल वर्ड आल्सो सेज आई एम पॉसिबल। तो ये हो सकता है बिकॉज वायरलेस डिवाइसेस, जैसे कि जो पिछले जो टॉपिक्स हैं उसमें हम बात कर चुके हैं कि जो दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि वो किस टाइप की इनपुट्स ले रही है, बट फर्क इससे पड़ता है कि वो उस डाटा को क्या करे, इस डाटा का क्या करे। सो इस प्रॉपर्टी के साथ ही हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है द नियरर फ्यूचर में, जो हमारे जो ग्रेट 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 चिल्ड्रेन डिसेंडेंट्स जो आने वाले हैं हमारे आने वाले फ्यूचर में, उन्हें ये मुश्किल होगा कि हम कौन थे। बिकॉज हम जैसे अभी मुश्किल हो रहा है कि हम कौन थे, हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, उस टाइम पे कैसे थे, एंड नाउ अगर वो अभी जिंदा होते, वो सोच रहे होते भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल था बट पॉसिबल हो गया ना। एंड समझने में मतलब बहुत दुख बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, बट हो सकता है। एंड न्यूरल फीचर में हम नाउ डेज जैसे कि हम ब्लूटूथ वायरलेस डिवाइसेस से हम किसी चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हम न्यूरल फ्यूचर में हमारे दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं एंड वायरलेसली हम सारी चीज़ें जो सराउंड में हो सकती है वायरलेसली, उस सारी चीज़ों को हम वायरलेसली कंट्रोल भी कर सकते। आई थिंक ये हो सकता है, व्हाई नॉट। ओके, एंड आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट टाइम इसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो लगभग 1 घंटा 12 मिनट हो चुका है एंड ज़्यादा टाइम ले लिया। एंड आज मेरा जो वीडियो ये आज पहले ही शूट कर रहा हूँ। आज अभी लगभग आफ्टरनून होंगे, लगभग 1 बज रहे होंगे। एंड मैंने इस वीडियो को भी कंप्लीट कर दिया बिकॉज आज इवनिंग में मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, तो काम आज जल्दी ही करना पड़ा। तो इतना ही आज के लिए, मिलते हैं तब तक के लिए बाय एंड ख्याल रखना अपना। एंड जाने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि ख्याल रखेगा अपना एंड ज़्यादा सोचिएगा मत, नहीं तो बाल झड़ जाएंगे। एंड ज़्यादा सोचने प्रेशर लेने से आपके जो मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था इन द 12 में। आई विल टेक मोर स्ट्रेस अबाउट हाउ विल बी डू इन माई एग्जाम्स एंड आई विल बी वेरी प्रेशराइज्ड। एंड मैं उसमें घुस के ही रहता था, बाहर दुनिया में देखा नहीं है 12 में। जितना हो सकता था मेरे से मैं कर रहा, एंड नाउ आई एम वट एवर आई जो भी हूँ। एंड सबको मैं थैंक यू करना चाहूँगा, स्पेशली मेरे कृष्णा जी को, मेरे माता जी, मेरे पिताजी, सबको, एंड मेरे दोस्तों को भी सबको मेरा धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसके तहत मेरे इस टाइप के जो कि मेरे दोस्त हैं जो एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट किए कि मुझे ऐसा बनना पड़ा। एंड थैंक यू फॉर एवरीवन एंड थैंक यू टू कृष्णा स्पेशली, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि इसमें मैं आया। एंड मुझे पता है कि कृष्णा ऑलवेज गिव्स टू ऑप्शंस कि तुम्हें ये करना है या नहीं, ऑप्शंस देते हैं एंड चूज़ करना मुझे ही पड़ता है। जो भी चूज़ करूँगा वो सही होगा, उसी हिसाब जो हिसाब से मेरे कृष्णा जी से मेरे लिए बनाया है। तो नाउ इतना ही कहना चाहता हूँ एंड सबको फिर से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सबको दिल से। एंड कृष्णा जी जो पिछले दिन दिया ना बहुत ही ब्यूटीफुल था।
एंड अब तक आज के दिन भी बहुत ही शानदार, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक है। एंड मिलते हैं। एंड नहीं, और कुछ नहीं, इसे मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा। जब बनेंगे ना उस दिन मैं आपको ये रिवील करूँगा। ओके बाय, ख्याल रखना अपना, कीप स्माइलिंग। ओके, स्माइल करना मत भूलना यार।